Hello friends, so welcome back to my channel. So let us start another video on German language. In this video we are going to learn about German verbs. So first of all, let us learn types of verbs. So there are two primary classes of German verbs. First one is regular verbs and second one is irregular verbs. Regular verbs follow standard conjugation rules. These verbs are also called weak verbs. As in English, the past form of regular verbs is formed by adding D to the root words. Example in English, save, saved and saved. रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कि एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं. जैसे हमने डी लगा दिया तो सेकंड फॉर्म बन जाती है, थर्ड फॉर्म भी बन जाती है. तो इसी तरह से जर्मन में भी रेगुलर वर्ब्स होते हैं. So there are some examples of regular verbs: kaufen, to buy; machen, to make; nutzen, to use; sagen, to say; and danken, to thank. And maximum verbs are regular verbs, means weak verbs in German. In the same way, we have irregular verbs also. Irregular verbs do not follow standard conjugation rules. These verbs are also called strong verbs. They follow their own path. They do not fit into a specific set of rules. Examples in English: see, saw, seen. जैसे कि इंग्लिश में भी होते हैं irregular verbs, तो उनका जो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, वो बिल्कुल अलग होती है, कोई पैटर्न नहीं होता. तो सेम वैसे ही हमारे पास होते हैं irregular verbs in German. And there are some examples of irregular verbs, strong verbs. These are called strong verbs. Tun, to do; kommen, to come; gehen, to go; stehen, to stand; and sehen, to see. Now next one is mixed verbs. Some regular verbs follow standard conjugation rules in the present tense but not in the past tense. For example, informieren is regular in present but irregular in past tense. So there are only 9 mixed verbs in German. कुछ verbs ऐसे होते हैं जो कि present में तो normal rules को follow करते हैं लेकिन past में नहीं करते हैं, है ना? तो उनको हम बोलते हैं mixed verbs. Mixed verbs have the characteristics of both weak and strong verbs. Like weak verbs, they add te ending to the past tense and their past participle ends in t. They also behave like strong verbs and change the stem vowel of the infinitive in the past tense and in the past participle. And here are some mixed verbs examples: informieren, to inform; brennen, to burn; bringen, to bring; denken, to think; and kennen, to know; nennen, to name; and rennen, to run; senden, to send; and wenden, to turn; and wissen, to know. Now auxiliary verbs. 3 main auxiliary verbs in German are sein, to be; haben, to have; werden, to become. These verbs are sort of helping verbs and all are irregular. Auxiliary verbs जो होती हैं वो 3 होती हैं: sein, haben and werden. Now let us talk about modal verbs. Modal verbs are unique words that tell us more about the main verbs in a sentence. There are 6 modal verbs in German. German में जो modal verbs होते हैं वो 6 होते हैं और इसमें हम जैसे can, make का यूज़ करते हैं तो वो modal verbs में आते हैं, जैसे können, can, dürfen, may, mögen, like, müssen, must, sollen, should and wollen, want. Now let us talk about separable or inseparable verbs. We can add prefixes to many German verbs to change their meanings. Verbs with prefix can be separable, trennbar, और inseparable, nicht trennbar. कुछ verbs में prefix add होता है ना? तो जो सेपरेट हो जाते हैं प्रीफिक्स उनको हम बोलते हैं सेपरेबल और जो सेपरेट नहीं होते उनको बोलते हैं इनसेपरेबल. सेपरेबल वर्ब्स 10 बार. द प्रीफिक्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन वर्ब. इट कम्स एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस.
जो प्रीफिक्स होता है वो मेन वर्ब से सेपरेट हो जाता है और सबसे लास्ट में चला जाता है सेंटेंस के. सो फॉर एग्जांपल आप स्टेहन इस स्टेह जीबन उअर आउप, तो जो आउप है स्टार्टिंग का वो लास्ट में चला गया है. देयर आर सम एग्जांपल्स हियर. आउस गेहन टू गो आउट, and common, mit common, aufstehen, weiter common, and nach common. Prefixes used with separable verbs an, auf, aus, bei, ein, fort, mit, nach, vor, weg, and zu. Now let us see inseparable or non-separable verbs. The prefix remains attached to the verb. The past participle is not formed with GE. इसमें प्रीफिक्स और मेन जो वर्ब होती है वो अलग नहीं होते हैं, एक साथ ही रहते हैं हमेशा. सम एग्जांपल्स हियर ऑफ इनसेपरेबल वर्ब्स. प्रीफिक्सेस यूज्ड विद इनसेपरेबल वर्ब्स फॉर, बे, एयर, एंड, एम्प, एयर, गे, मिस एंड सेर. फॉर एग्जांपल verkaufen, bekommen, erwarten, entlassen, entscheiden and vergessen. One more thing you must know, separable or inseparable verbs about it. A few prefixes can be either separable or inseparable depending on the way the verb is pronounced. When the stress is on the prefix itself, the prefix is separable. And when the stress is on the stem of the verb, it is an inseparable verb. तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सेपरेबल भी होते हैं और इनसेपरेबल भी होते हैं. अगर उनका जो स्ट्रेस है वो प्रीफिक्स पे हम डालते हैं, यानी कि जो जोर डालते हैं बोलते टाइम पे वो हम प्रीफिक्स पे डालते हैं, तो वो सेपरेबल होगा. और अगर हम ये जो स्ट्रेस है वो स्टैम्प के ऊपर ज़्यादा जोर है बोलने पे, तो इनसेपरेबल वर्ब होगा. फॉर एग्जाम्पल सेपरेबल और इनसेपरेबल वर्ब्स. दूश फालन and it is durchdringen. Next one is steigen, armen, wieder geben, wiederholen. Now let us see reflexive verbs. Reflexive verbs are formed with reflexive pronouns. They are preceded by jis in the infinitive. Example, jis aussehen, to undress oneself. So we use reflexive verbs when subject and objects are the same. You carry out an action for yourself, not for others. जब हम कोई काम अपने लिए करते हैं, जैसे कि मैं ये काम खुद के लिए कर रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं reflexive verbs. For examples, jis duschen, to shower, jis waschen, to wash oneself, jis anziehen, to dress oneself, jis aussehen, to undress oneself, jis baden, to take a bath, jis finden, to be located, and jis freuen, to look forward to, and jis fühlen, to feel. Jis treffen, to meet, jis rasieren, to shave oneself, jis vorstellen, to introduce oneself, jis jetson, to sit, jis verabschieden, to say goodbye, jis legen, to lie, jis kämen, to come, jis informieren, to inform oneself. And next one is dative verbs. There are about 50 verbs that always take dative indirect object, जैसे helfen, folgen, gefallen, gelingen, sagen, gehogen, smacken, danken, glauben, antworten, geben, and wehtun. So these are dative verbs. So there are about 50 verbs in German. So this video was only for learning something about German verbs. So we'll talk about the conjugation of the verbs in next video. So till then, tschüss.